रोटी आता है बनाने, सिंपल दाल। बहुत ही वाहियात खाना है। মামনি ৰেছম গোস্বামীৰ নামো যে ইন্দিৰা গোস্বামীয়ে সেই বস্তুটো মেক্সিমামে নাজানে যদিও অসমত থাকে। এদিন কি হ'ল আমি প্লেন কৰিলোঁ বিয়াৰ খোৱাৰ। মই বিয়াৰ নাই খোৱা মানে। मास कम्युनिकेशन तो मैं क्यों करना है, तो मुझे इतना नहीं पता था, सो आई सेड आई जस्ट वांट टू हैंडल सोशल मीडिया, सो इसीलिए मैं कर लेती हूँ। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ খাটাং খবৰত এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানলৈ। এটা নতুন অনুষ্ঠান, আপোনালোকে আগতে নেদেখা, আগতে নোচোৱা এটা নতুন অনুষ্ঠান। আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব পৰ্টেল, নিউজ ৱেব পৰ্টেল খাটাং খবৰ আৰু ৰেডিঅ' গপশ্বপ আমি একেটা আমবেলাৰ তলৰ প্ৰতিষ্ঠান। আৰু এই ৰেডিঅ' গপশ্বপ আৰু খাটাং খবৰে লগ লাগি এটা নতুন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। RJ হান, আপোনাৰ যদি ৰেডিঅ' জাৰ্নেলিজিম কৰিবলৈ মন আছে, আপোনাৰ যদি RJ হোৱাৰ মন আছে, তেনেহ'লে আপুনিও আহক আমাৰ এই RJ হান্তত ভাগ লওক। আৰু কেনেকৈ হৈছে RJ হান, ক'ত হৈছে, কেনেকৈ আপুনি ভাগ ল'ব? নেনা আছে মোৰ সৈতে। নেনা, কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কৰিব লাগিব? So it's very simple, Manas da. All you have to do is that our RJ Huntot participate koribor karne apnaloke eta 1 minutor short introduction video amale pothiabo pare, and you can upload it in your Facebook and Instagram handle or our GupShup official page of tag koribo, which is at Radio GupShup 94.3 FM. Othoba apnaloke jodi amak WhatsApp kori video to pothao bisarise, then our number is 7099010943. এই নম্বৰলৈ আমাক WhatsApp কৰি আপোনাৰ short 1 মিনিটৰ ইন্ট্ৰোডাকশ্যন ভিডিঅ' পঠিয়াব পাৰে। ইটস দ্যাট সিম্পল। একদম নেনাই কোৱাৰ দৰে একদম চিম্পল। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে তিনচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰত ইতিমধ্যে আমাৰ অডিশ্যন হৈ গৈছে। গুৱাহাটীত অডিশ্যন চলি আছে আৰু কেইবা ঠাইতো গুৱাহাটীত অডিশ্যন হ'ব। আপোনাৰ যদি RJ হোৱাৰ মন আছে লাইক নেনা, আহক, আপুনিও আহক। আমি কৈছোঁ প্ৰাউড টু বি লোকেল। আহক, আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটোলৈ আগবাঢ়ি যাম। सो मैं रेडियो गपशप के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। रेडियो गपशप 94.3 FM एक लोकल FM स्टेशन है। लास्ट 14 इयर्स से हम सबको सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे है डॉनबॉस्को यूनिवर्सिटी में, लुकिंग फॉर द नेक्स्ट वॉइस ऑफ रेडियो गपशप 94.3 FM, जिसके आवाज़ सुन के पूरा गुवाहाटी सुबह गुड मॉर्निंग शुरू होगा। सो हम लोग बस यहाँ पे इसीलिए है ताकि आप लोगों से बात करें। आप लोगों में से वो बेस्ट जो भी अपना 100% देंगे आज, उनको सेलेक्ट करके लेके जाएंगे। एंड एक्चुअली जब मैं आ रही थी ना, इतना सुंदर कैंपस है, इतना अच्छा है, इतना सच अ ब्यूटीफुल, मतलब इतना अच्छा कैंपस में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे देख के लग रहा था कि काश मैं भी यहाँ पे पढ़ पाती। और मुझे मतलब वो फीलिंग आ रहा था, मैं फील कर रही थी कि आज तो मिलेगा ही हम लोग का नेक्स्ट आज है। लेकिन यहाँ पे आके तो दिख रहा है कि आप लोग तो बिल्कुल जोश में नहीं हो। ओके, चलो फिर शुरू कर लेते हैं। Selena, can you more elaborate introduction about yourself? And we are not there. You're just introducing yourself to your friend who has joined this college new. Okay. Your background, where did you schooling from? What course you're doing out here? About the campus? Okay. Yes, sir. A new student has come. Okay. She has joined it, and you're just chatting with her. It has to be more elaborate. Okay. My name is Selena. So I'll be your tour guide from today. I can be your best friend. I studied in Paramount School from Shillong, and currently I'm pursuing my psychology degree bachelor's over here, and I can show you around campus and help you go forward with your studies and give you advices. This introduction was good, but there has to be more lively. It's going in a very plain, suppose... Selena. Yes. Suppose if I am at your place, how do I do it? Pardon, sir? How do I do it then? My introduction. Suppose I am Selena. Yeah. Hi guys, my name is Selena, and I'm doing here Bachelor of Psychology, and you speak something about psychology, so which is something which is funny, and you say we have a great campus. There are a lot of tea estates here. It's a green campus, and in rainy days, it's really marvelous. So that's the way you speak to your friend, correct? So it's not a normal job interview, right? I know you have been through all those grilling interviews and all. I know because we also went through such interviews in our life.
But this is not a grilling while I'm doing, oh, tell me something about yourself, okay. Oh, okay, sit properly, okay. No, it doesn't. Simple, be yourself. Probably close your eyes. Hi, I'm Selena. Welcome to the new campus. I'm your senior. So, but don't worry, I'm not gonna rag you. So I can show you around the campus. Even though if you get tired, we can call an auto and go together. Yeah, because I know walking is really tiring over here, and because of the sun, so I get you. I can help you around with signing up for new clubs and all, like whatever you're interested in. Mornings got up and you're getting late for the class, I guess, or you're on time? I'm on time. You're on time? Yes, sir. You're not a late sleeper? Yes. So just describe your morning from the moment you got up to the first the classes. So just describe very briefly. So today I got up late because I didn't hear my alarm ringing, and sister came and she knocked on our door, and she said that if you guys don't wake up, and my cupboard was broken, so she knocked very hard on our door, and she's like, get up, otherwise I won't fix your cupboard. And all our friends got irritated, and we all rushed, and since we realized we're late for class, and our first period was really boring, so we just told our friend that give our proxy and we'll come on the second class because because we're gonna sleep anyway, so yeah, please give our proxy. And we hide from sister in the terrace. What's the most craziest thing besides the black flip you did? Can you think of something you want to do, or you want to? Yeah, so I've done gymnastics and I'm self-taught in it, and I do ballet also, self-taught, and I love working out. I work out almost every day. Is that the craziest thing you have done so far? First craziest thing I did was taught myself how to learn how to splits. Okay, great. I wonder how you do it, because I tried. I was scared. I'll break my leg. So you just have to start stretching, then slowly you'll get there. No, so like it stretches your muscle out, so even for your age it's very easy to get into splits and all. In the meantime, you've taken the product Hyundai car. Yes. Okay. Have you thought of this? How you do? So I'll do it now. Suppose your dad has bought a new car and you've gone home in the autumn break. Okay, and you go for a drive, and then you describe the first ride you took to your friend. Yes. Okay, so think of that situation. Evening you went for a drive with your dad, and Radko you're describing the ride to your friend. So my dad bought a new car today. It's a Hyundai, and it has like we went out 6 to 7 people, and we really sat there comfortably, and it was nice because there was this sunroof, and I looked above it and I was enjoying the breeze and the view, and it was also a hot day, so the breeze was very calm and it was nice. And like we went for a long journey, and until it was dark, and like it had lighting, and like it was like LED lights inside, so it was really fun because it was like I felt like I was in a disco with lights all over, and I could change the lights according to my mood, and yeah, it was really fun and comfortable. And we were discovering new roads, and it was really comfortable car. Are you comfortable in Hindi? Can you mix Hindi and English? No, so my Hindi is broken. No problem. मैंने आज मेरे पापा के साथ नया काम में गया, और फिर एक बड़ी सी कार थी, मेरे फैमिली के साथ गया आज 6 से 7 लोग, और वहाँ में कार में बहुत कंफर्टेबल था क्योंकि वो बहुत बड़ा स्पेस है और कंफर्टेबल सीट्स
भी है और लाइटिंग भी बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ डिस्को लाइट्स जैसा ही था और हमारा मूड था ट्रैवलिंग के लिए तो हमने ब्लू लाइट चूज़ किया था क्योंकि वो ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा है हाँ You describe how was your RJ experience to Shilpa and just say, Shilpa, come over, now's your turn, something of that sort. I had a fun experience being an RJ, but I was really nervous. But it was a nice environment because everyone was very welcoming and no one judges you. So just be confident and you're next. So, yeah. So let me introduce myself. I'm a student of psychology, 6th semester. तो साइकोलॉजी लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था क्लास 12 में सीरियसली मेरे को सिर्फ क्लास साइंस को पार करना था तो सेकंड डिवीज़न भी मिल जाता फिर भी आई वुड बी हैप्पी बिकॉज साइंस वाज वेरी टफ फॉर मी तो समहाउ आई गॉट फर्स्ट डिवीज़न लकीली एंड देन उसके बाद आई वेंट समवेयर एल्स टू स्टडी उधर भी ना कुछ जमा नहीं ठीक है मेरे जैसे लोग नहीं मिले जो मेरे को एक्सेप्ट कर सके हमेशा बांध के रखते थे उनकी गलती नहीं थी मेरे को आगे का कुछ समझाने वाले थे कि ये मत करो गिर जाओगे वो सब इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल सो आई केम बैक फ्रॉम देयर एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड दैट आई डोंट हैव एनी गोल इन माई लाइफ आई हैव फॉलन इन टू द pit of depression and I was diagnosed clinically depressed तो मैंने क्या किया चलो somebody suggested me to study psychology then I took up psychology मेरे को लगा कि मैं अपने आप के बारे में जानूंगी और obvious right psychology it खोल के रख देता है पूरा और डर लगने लग गया पढ़ने के बाद मेरे अंदर डिप्रेशन से भी ज़्यादा भी कुछ है हाइपोकॉन्ड्रियाक और वो सब कुछ है but now I am somehow able to cope with it and yes this is where I am now. You are from which place? Where did you do your schooling from? I did my schooling from Meghalaya, one of the most beautiful states in the northeast. It is known as Abode of Clouds and yes I did from there my schooling entire up till class 12 I was born and brought up there. Like to hear about this university. Pardon sir? When did you come to know about this course out here? Somebody suggested me, my friend she suggested, then I served in the internet, browsed it and I got to know about this. वो सब अरे वो सब तो मज़ा है वो तो और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैं बोलती हूँ आप लोगों को क्या हुआ पहली बात आई सबमिटेड माई फॉर्म इंग्लिश आई वुड हैव बीन इन योर ग्रुप ओनली बट क्या हुआ मैंने अपना फॉर्म देखा क्या बोलते हैं एडमिशन के वो जो रिसेप्शन में देन इट सेज एजुकेशन मैं इतनी भुलक्कड़ कैसे हो सकती हूँ आई एम सो इन माई ओन वर्ल्ड इन आई डोंट नो विच प्लेस आई एम एट education then I went to the administrative department sir I have given my form in English मेरे को education में चला गया and then he started talking to me कि how did this happen पता नहीं जब मैं उस रूम से निकली तब suddenly मेरे फॉर्म पे psychology लिखा था so the transition happened in that place लोगों ने बताया था कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है वो सब है बट somebody had to tell me कि देखो past is past then suddenly while sitting out there I realized कि psychology it would be a very apt subject for me and then he gave me an introduction about how it is and how it goes by its studies about this that और हाँ मैंने एडमिशन में ये भी बोला था कि I want to change the world by studying psychology उस बंदे ने उठ के मुझे ये कहा पहले खुद को चेंज कर लो फिर दूसरों को चेंज करना. Besides English and Hindi, what other language are you comfortable with? My mother tongue is Bengali, but since I don't converse much in Bengali, so thoda bahut, English comes in or Hindi comes in the entire conversation. So yeah, somehow I can pull that also well. Somehow. चल लेते हैं आपका हिंदी, बंगाली, इंग्लिश का आप कैसे बोलेंगे? एक पैराग्राफ सो ओके देखो what last movie you watched? Oh, last movie I watched, it was a South Indian movie, so I watched. তো ওটা অনেক ভালো ছিল, দেখতেও ভালো লেগেছে. And then what's the name? In Hindi में डब था, it was named as Love Story. Love Story. Shilpa, why do you want to be an artist? Honest answer. Honest, I'll tell you, I had no plans. First place.
I was sitting in the class, first period. Then my class teacher, like my previous class teacher, she called up our CR and she said, and she told him, please take Shilpa also because maybe I answer well in the class and I'm quite extrovert person. I say, so she thought this will be a very good exposure for me to gain an experience. So yes, RJ. हाँ, imagine किया है when RJ Malishka को सुनती हूँ, but हाँ, उतना नहीं कि मतलब. She is. I don't know. I can't fit in. She's so vibrant. She is such the best part is that the way she talks to her guest. It is so involving. It is so nice that she's into the conversation. 110% involvement of her is there. And after that, Gana. कुछ भी আমাকে আমার মতো থাকতে দাও, আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি, যেটা ছিল না সেটা না পাওয়াই থাক, সব পেলে নষ্ট জীবন, তোমারই জানলা ঝাপসালোয় কিছু সন্ধ্যের গুঁড়ো হাওয়া কাছের মতন, যদি উড়ে যেতে চাও তে গা ভাসিয়ে দাও, দূরবীনে চোখ রাখবো না 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 না. ये सब BA साइकोलॉजी के बच्चे हैं यहाँ पर. हाँ, स्टार्टिंग में सब वही पहुंचा था. तो फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ अनुराग and actually I'm not from around here, as you can make from my appearance. I'm from Ranchi, Jharkhand. Multilingual. It's like I know a few, like I have been places, so I know a few languages, but I'm not actually quite fluent in them. Hindi हाँ अच्छा से आता है, but like while coming here I cross Bengal, I cross West Bengal, I then enter into Assam. So being here for like it's been 3 years now that I've been here. So लाहे लाहे असमी सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे. एंड दोस्तों से भी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं. जैसे मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, मतलब उनसे बीच बीच में असमी से बात करने में अच्छा लगता है. जैसे और फिर जब स्पेशली अगर बाहर हाईवे में खड़े हैं लोग, जैसे कैंपस से अंदर, and if anyone is looking for directions, they'll obviously speak in Assamese. So the first thing we try is like listen for keywords like and even Assam, there's Assam DonBosco. They don't say DonBosco, they say DonBox, Assam DonBox. So it's like, oh, actually they meant this, they meant that. So that is how we came to like help them without actually knowing the language. But slowly. You're describing this. You're after the you're in which semester? Sixth semester, final year. Final year. Yeah. So you're going back and you meet some friend youngster and you're describing the institute or the course. How do you do? So just. But it has to be interesting. Why will he come all the way from Ranchi and take an admission here? Yeah. You have to sell the university in an interesting way. Yeah, first I'll start with my experience about getting here, then I'll switch. Yeah, whatever. Okay, but it has to be that idea of coming to this university has to be sold. Yeah. It has to be interesting. Okay, I'll try. Yeah, so sorry for fiddling with this mic again and again. It's been a habit. After passing my standard 12, I was not actually looking for places to study. I was actually looking for a good place to stay while I study. It wasn't like I want to pursue this as a career. It's like I want to study at a place which I feel calm, soothing, and actually when I'm depressed, or not actually depressed, depression is quite serious when you talk about it. When I'm sad, it's like I like to go to places where there are breeze, cold breeze. Like solitude is must. Being alone by yourself. बोलिए किचन में क्या बनाता है? रोटी आता बनाने, simple दाल चावल सब्जी simple. You are describing your friend. She stays abroad. She doesn't know India. Just describe the process of making a roti. Roti.
Hey, you know, I made roti yesterday. It's like, it is supposed to be an easy experience, but sometimes it tends to be hard because you have to get the right consistency of this and that and this. Leave all that bullshit, I'll make everything simple for you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Before I say my name, I'd like to say something. Now, whenever there's heavy rainfall and the sky is black as asphalt, you know, but right before the rain stops and this cloud starts to fade away, and there are few rays of sun, glittering lights of hope that is piercing through that cloud. That, my friend, is called Anshul. So whenever you look up the sky and see a silver lining, remember my name. This is Anshul Aldrin, BA Psychology from Ranchi, Jharkhand. I sing sometimes I write music as well. Yeah, quite a nice introduction, a very different introduction from the rest of your friends. Anshul. Yeah. Okay. Just from the morning, and till now, can you describe in an interesting way how you and where did you come to know about this RJ Hunt? Okay. Yeah, he's my younger brother. He's supposed to live with me. So yeah, the party that he was talking about, we were actually referees for last evening basketball match. We are quite good at basketball as well. He's a national level player, and I used to be a coach for a school for basketball, badminton and football, and also a music teacher. So I like to boast around, you know, telling my achievements and all that stuff. So obviously we were supposed to have one, but then we had two, and then one more is never enough. So we had another. Yeah, who was the next participant? Agatha. Again, Agatha को अपना style में बोला, and English में. All right, Miss Agatha. Like, you're looking quite pretty from over there, but you know, इतना सुंदर हो, सबके सामने आ जाओ, सब देखेंगे, और है कि नहीं? तो it's like, for now, come here, I'll walk past you, and उतना में खुश हो जाएंगे हम, चलो. अच्छा, तू भी BA Psychology? यस सर. क्या पूरा साइकिल के क्लास बैठा हुआ है क्या पीछे में? लग तो वही रहा है. हाँ? लग तो वही रहा है. अच्छा. Your teachers will scold us, yeah? बच्चों को यहाँ पर लेकर है, they must be just. As long as we get on attendance, why not? Okay, great. Okay, you must have heard the proceedings of your friends, how it come. Yes sir. I did not describe to you anything, I guess. Yes sir. Okay, so let's start over. Yes, so hi everyone. Keep it, since you are fluent in Hindi, English and Khasi. Yes sir. So do a combination of, in all the conversation, it should be a 3-language combination. Okay. Okay, keep that in mind. Okay. Hello. Khasi, Hindi and English. खांसी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है. English and Hindi, that will do? Okay, hi everyone, good afternoon. I am Agatha Clara Toddy from Shillong, born and brought up there. Coming here was not my plan to Assam DonBosco. जाना तो कहीं और जाना चाहती थी, but ज़बरदस्ती मेरे को यहाँ पे डाल दिया. My mom, because this place was suggested to my brother by a friend. And उन दोस्त ने कहा था कि जगह बहुत अच्छी है, कैंपस बहुत बड़ा है, खाना बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह. यहाँ आने के बाद पता चला कि हॉस्टल में टॉयलेट भी साफ़ करना पड़ता है. मैंने कहा आपके दोस्त ने तो नहीं बताया ये बात. तो खाना अच्छा है ये बताया था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत हुआ कि बहुत ही वाहियात खाना है. Seriously, because coming from Shillong, we are used to boil food and all. यहाँ पे आके पूरा मसाला ही मसाला हर जगह. यहाँ पे स्पाइसी फूड, मसाला, सब कुछ. रूम में वापस जाओ, नींद आती नहीं. 4 जन एक रूम में बैठ के, कोई सोता है तो कोई चिल्लाता है तो कोई गाना गाता है. So because of all these difficulties in my room, it was just day before yesterday, Selena was narrating you guys a story, right, about
sister banging at the door. तो मैं सलीना के रूम में सोती थी because सलीना के रूम में थोड़े understanding है. They keep quiet in the morning. तो मैं सो रही थी and suddenly sister was like, open the door, वरना your cupboard won't be fixed, right? And we are not allowed to sleep at other people's room. उठ के जो मैं कूदी and I was hiding under Adane's desk. And then I was like, sister आ गई तो देख लिया तो हो गया काम. But then sister went to somebody else's room and मैं वहाँ से निकल गई. तो बोलने से तो जुगाड़ू हूँ by nature. It's quite nice. Can you give us another introduction about you have to sell this university. You're going back home in your break. Your neighbor's daughter wants to study out here. So how will you sell this university about the course? Okay. Like if I have to talk, hi, can I talk to you, Adane? Hi, Adane. So I heard you're planning to come to Assam DonBosco. It's a good place, but let me just tell you about the food, because I don't want you to suffer like I did about the food and all. But it's a good place, the teachers are good, the courses, there are multiple courses you can choose, and the campus is really nice. You can go out for a walk in the evening, but you might not be able to bear the heat, so yeah, that's it. Anything wackiest thing you have done in life so far? In your 22 years of existence? 22 years of what you have done, or something crazy thing you want to do? I want to do that I've done. कुछ भी बोलो. अच्छा ठीक है. So I'll just elaborate the story that I've put there. So I was in my higher secondary, and back then I had this I was in this group who was very जोश में था कि चलो मारने चलते हैं इन लोगों को, like whoever comes and mess around with us. लेकिन कॉलेज से निकलने को नहीं मिल रहा था. So what did we do? We bunked the class, and I passed out from Lady Keane College for my higher secondary. So उनका एक hostel drainage था, which leads to the road outside. So because we cannot pass from the main gate, वो hostel के drainage से होके गए थे हम बाहर. जब तक पहुँचे कीचड़ पे पूरा कीचड़, and then उसके बाद yeah, we met the guy, we bash him up. Group bashing, not me alone. No, I'm out of that all now. I'm good. I'm clean. Clean now. सुधर गई. Yeah, सुधर गई. बड़ी हो गई तो सुधरना पड़ेगा. We have come. You have chosen about the product. Yes, sir. You have gone through the paper. Yes. Have you planned something you have thought about? Nervous, but okay. Can you do it, or you want some time to? I think I'll do it. Okay. So It's now or never. Yeah, it's now. Okay. Okay. अच्छा तुम इसको दो लैंग्वेज में बोलो. दो लाइन. दो लैंग्वेज like दो language. Okay. It should be English, not In Hindi. not Bihar. In English. Okay. Okay. And describe to your friend some situation later. I don't want all the technicalities of the thing not followed. Okay. You're worried about that? No, not really. Okay, fine. Okay. Okay. Adanye, do you know my friend Rajiv? He bought a car yesterday. It's called Hyundai Alcazar. Don't mind about my pronunciation. इधर उधर निकल जाती है. Sorry. So the car was really nice. It's spacious for 6 to 7 people. But if you have a bigger family, तो एक दूसरे के गोद में बैठ सकते हो. कोई दिक्कत नहीं. It's comfortable for a long journey, especially for people like us who study here. Maybe coming from Shillong to Guwahati, we can buy that car, like my friend Rajiv did. And it has a sunroof, so you don't really have to keep your head out now to, you know, experience a chill breeze. And it has a wonderful, color, 64 colors. I heard. That's what Rajiv told me. I'm not sure. The colors are pretty good. I heard they were my favorite colors, purple. Yeah, so how about we buy the car someday in future if we are that rich? Maybe. Thank you. Yeah, thank you so much, Agatha. Thank you. And now we have with us Avinash Singh,
and he is the brand and communication department, Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited. And he will say a few lines about Honda. Good afternoon, everyone. Thank you so much for giving me this opportunity to speak in front of you all. Myself, as ma'am introduced, Abhilash Singh from Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited. So I'm from Brand and Communication Department, and first of all, I want to congratulate everyone. All right. Sanava sir, he recognized me because even I am an ex-student of this university from Ajara campus. I passed out in the year 2016 from Computer Science Department. So after that, now I'm a part of Honda. So great coming back to my own university. So a great opportunity also, and I'm very, very good. Alright. So yes, first of all, congratulations that you are trying to be a part of this, radio GupShup. So I congratulate you all. And now I'll speak about something about road safety that we are really focusing on. Just having a bike, or if you're working on the road or traveling in a four-wheeler, you're driving a four-wheeler or riding a two-wheeler bike of any company, whether it's Honda or any other company, doesn't matter. Your safety is more important, okay? Your life is more important. So I am here on the part of the safety. So I have with me few leaflets that I will share with you all, okay? Please go through the leaflets, okay? So that will definitely help you, and make sure, and you know that in our country the road accident is a very serious concern, okay? So every year, if I give you just a small data, every year 1.5 lakhs people in our country, they lose their life on road accidents. Okay, they include small kids, young generation like you, and adults, like elderly people. All right. So why this is happening? This is just because there are lack of awareness and less of self-control. Like if you have a bike, if someone buy a bike, new bike, as one of the participants was saying, Honda CB350R. Okay, so what the first thing you will do, you will try to ride it in a very high speed. Alright, so high speeding and drunken driving, these are the most, like I will say, the two of the most reasons of more numbers of accidents. So you have to be very responsible whenever you are on the road, whether you are on a two-wheeler pedestrian or on a four-wheeler. Okay, always ask to yourself whether this high speed is necessary or not. I will recommend you never drive in a high speed, never go for any kind of racing until and unless you have expertise of it. If you don't have the expertise, don't try any kind of stunt. Okay, get some proper training, you have a proper license, and then only come on the road. Okay, so I will not take much of the time. Rest of the things are mentioned in the leaflet. Please go through it. Okay, and be safe, be healthy, and you're doing a great job. I have heard some of the participants speaking over here, so it was very nice. Okay, and I congratulate you all once again and wish you all the best in your future. Thank you so much. Namaskar. My name is Bhamini Kashyap. I'm from Department of English, final year student. Okay, I'm a little bit nervous. Relax. Relax. You want to kill it formal. Yeah. Okay. You're comfortable in, I guess, English, Hindi, and Assamese? Yes. Okay. So in all the conversations, try and stick to these three languages. Okay. So start koru moi Assamiyar pra, jehetu Asamiya mor mother tongue. Fine. So introduce yourself. Yeah. Your journey, college, schooling, Gopra, and how did you land? Okay. In ADBU? Yeah. ADBU to it's like purana love story ho gaya ADBU se. Like also BA also I have done from here. Again MMA भी आ गई. मतलब ADBU तो छोड़ ही नहीं रहा है. अभी अगर फादर PhD भी ऑफर करेगा यही बचा होगा. अगर PhD भी आके यही पर करूँगी. लेकिन अब वो पता नहीं यहाँ पर मतलब बहुत हो गया. फिर मैं बेसिकली मैं तोंगला से हूँ, वो उडालगुड़ी में होता है वो जगह. तो वहाँ पर मैंने मेरी स्कूलिंग एंड ऑल कंप्लीट किया है. फिर आई हैव टेकन एडमिशन इन ADBU. पहले तो मुझे यहाँ पर मतलब तेपेसिया कैंपस है वो तो मुझे पता भी नहीं था. डायरेक्टली मैं आजारा चली गई थी मतलब एडमिशन के लिए. फिर पता चला यहाँ पर तेपेसिया भी है. तो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ आ गई यहाँ पर. तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जैसे सबको लगता है यहाँ पर
3 language. ओके सॉरी सबको यहाँ पर लगता है लाइक इमान धुनिया क्लाइमेट है यार इमान धुनिया सीनरी है सो सेम थिंग मुरू लगी से मुझे भी ऐसा ही लगा मतलब बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस ही ऐसा हुआ था जब मैं आई यहाँ पर गाड़ी में लाइक থাকে ন एकदम চিড়িয়াখানার एकदम মানে জন্তুর निचना आई वाज एकदम सेम टू सेम ऐसे ही थे गाड़ी में आई थी পিছফালে বহি আছিলোঁ গাড়ীৰ বেক সিটত এণ্ড দেন when I came inside the campus and then I was like wow and literally মই খিৰকিৰেদি মানে মূৰটো বাহিৰ কৰি দিছোঁ and you can see my size also ওলাই গৈছোঁ মই মানুহটোৰ পৰা ওলাই পেলাই লাইক wow ইমান ধুনীয়া কেম্পাছ wow I was like really good and then BA পঢ়ি ল'লোঁ MA to admission লৈছোঁ but yeah one of our friend was saying about the food আমাৰ কেণ্টিনৰ এটাই বস্তু এটা খানা ফেমাছ হয় সেইটো হ'ল আলু চবতে আলু ঢালি ভাল পায় they just love potatoes anywhere you will get আলু আজি যদি আপোনালোকে ভাত খাব ন definitely পাব মোৰ নাম চেঞ্জ কৰি দিব যদি আলু নাপায় ক'তো so yeah तो डॉन बॉस्को फाइनल ईयर सो पढ़ के अभी देखते हैं फिर क्या होता है अभी ये लंच करने what do you recommend we should eat out here? You can go for খাসি that খাসি কাউণ্টাৰ সিহঁতে বহুত ভাল মানে লাইক ভেৰাইটি ছাৰ্ভ কৰে এণ্ড ইভেন খানাটো ভাল হয় আৰু গাত মানে বেছি অইলি খানা নহয় চবেই ভাল হয় চৰি এতিয়া হেৰিও কৰিব নোৱাৰোঁ আফটাৰ অল নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটি হয় গোটেইকেইখনে ভাল হয় চ' ইয়াক খাচী খানা ট্ৰাই কৰিব পাৰে Okay, and then I'm going for Khasi food. Yeah. I don't know about my colleagues. Okay, what is the wackiest thing you have done in life so far? So frankly, you have written, yeah, explore more, yeah. So frankly speaking, sage etialo aru koryo baki ase. I need to explore more. So I guess italo chance poa nai as a day scholar. Aru eta mane point like hostelers get more chances to explore some craziest things in their life. But being a day scholar, I guess, mane itu itialo mo chance poa nai, and I'm looking further. Jaru pao. I guess mo korisu sage, but right now likhar point at more mane hetu explain koribole para nai. But then yeah, so hetu aru as you know, I told like my MA background or hoy, sorry MA English or. So সবে ভাবে MA ইংলিছৰ মানুহবিলাক বেয়া ক্ৰিয়েটিভ হয় একদম যেন আমি একদম ক্ৰিয়েটিভৰ বেগ লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ পিঠিত একদম তো আৰে তো এইটো MA ইংলিছ হয় ইউ আৰ তো ক্ৰিয়েটিভ ইউ শুড বি ক্ৰিয়েটিভ বাট তেনেকুৱাতো একো নহয় দেট উই নিড টু বি ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড লাইক অ' ইউ আৰ ইন MA ইংলিছ অ'কে চ' ইউ ৰাইট 100 poems অ' ন' ইভেন আই হেভ নট ৰিটেন ওৱান ছিংগল poem মেন চ' অফক'ৰ্ছ তো সেইবিলাক ষ্টিৰিঅ'টাইপছ হয় One very typical questions, why do you want to be an RJ? সঁচা কম নে মিছা কম Okay, first Misa Kothako, then you tell. Okay, মিছা কম ইটছ এ ড্ৰিম সৰুৰ পৰা RJ হোৱা সপোন আছিলে চবৰে থাকে মোৰো আছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত আহিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ RJ হৈ পেলাই অফক'ৰ্ছ ফেম পায় মানুহে তো মোকো RJ ভামিনী হিচাপে জানিব মানুহে তো সেইটো এটা আৰু সঁচা ক'ব লাগিলে এটা নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়তো যোনটো মানুহে কেতিয়াবা মিছাটো কৈ দিয়ে বাৰু সেইটো একো নাই বাট ইয়া we can gain experience also we can explore more areas to connect with people with different backgrounds or yeah we can train our personality also with that so yeah I think it's a good exposure for not only me for everyone sitting in this room কিন্তু আইৰেনি এটাই মোৰ মা বেষ্ট ছিংগাৰ হয় বাট মই একো ইয়া মই এক্টিং কৰি ভাল পাওঁ মানে লাইক পেণ্টমাইম এণ্ড মাইম এইবিলাকত ইণ্টাৰেষ্টেড আছে So yeah, this is one thing. So good afternoon everyone.
My name is Indira Goswami. I am pursuing my master's in English. I am final year student. So, as I am from Assamese background, so namaskar to everyone. Indira, 3 languages, mix and match. 3 languages, ঠিক আছে sir. So, মই ফাৰ্ষ্টতে ক'ব বিচাৰিম মোৰ নামৰ হিষ্ট্ৰীটো। নাম মই যেতিয়া কওঁ মোৰ নামটো ইন্দিৰা গোস্বামী বুলি চবেই মোক ফাৰ্ষ্ট জোকাবলৈ লয় ইন্দিৰা গান্ধী কৈ পেলাই, কিন্তু মই এটা বস্তু বুজি নাপাওঁ, ইন্দিৰা গান্ধী যে কয় মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ নামো যে ইন্দিৰা গোস্বামী সেই বস্তুটো মেক্সিমামে নাজানে যদিও অসমত থাকে। তো সেইটো মানে মই বস্তুটো ভাল নাপাওঁ, মানে কৈছে অসমীয়া ৰাইটাৰ এজনীৰ লগত ক'লেও মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীটো ডাইৰেক্ট কিয় গুচি যায়। তো ইন্দিৰা গোস্বামী নামটো একচুৱেলি মোৰ ক্লাছ 9ৰ পৰা পৰিছে। চ' বেচিকেলি ইট ৱাজ পূজাৰ্চনা গোস্বামী। তো মোৰ ক্লাছ 8লৈকে সেইটো নামেই ৰাখিলে। তাৰপিছত কোনোবা এজন নিউমাৰলজিষ্ট এজন আহি পেলাই মোৰ দেউতাৰ কাইণ্ড অফ ব্ৰেইন ৱাছ কৰা বুলিয়ে ক'ম মই। তো ব্ৰেইন ৱাছ কৰিলে, কৰি মেলি ক'লে যে নিউমেৰিকেলি নামটো মোৰ কাৰণে চুটেবল নহয়, পূজাৰ্চনাটো হয় কিন্তু পূজাৰ্চনাৰ নামটো যিহেতু চবে প্ৰনাউন্স কৰিবলৈ নোৱাৰে মোক কাৰণে পূজা বুলি মাতে। তো নিউমেৰিকেলি মানে সেইটো বস্তু মোৰ কাৰণে চুট নকৰে কাৰণে মোৰ নামটো চেঞ্জ কৰি ইন্দিৰা কৰি দিলে। তো সেইটো লৈ পেলাই মানে মই মিছা নকওঁ, আজিলৈ মানে মোৰ দেউতাৰ ওপৰত গ্ৰাজ আছে সেইটো লৈ পেলাই যে মোৰ নামটো ইমান ধুনীয়া নামটো পৰা ইন্দিৰা কিয় আনিলে। তো যদি মই বৰ কৰা নাই মোৰ মানে হিষ্ট্ৰীটো সেইটো। অৰ্চনা একজেক্টলি চবে সেইটোৱে কয়, মানে পূজাৰ্চনা এটা নামেৰে নাচায় কোনেও। যেতিয়াই কওঁ যে মোৰ নামটো পূজাৰ্চনা আছিলে বা পূজাৰ্চনা হয় তেতিয়া মানে চবে কয় যে তোমাৰ নামটো পূজা অৰ্চনা, তেতিয়া মানে আকৌ ক'ব লাগে মই ডিষ্টিংক্টলি যে নহয় একচুৱেলি মাই নেম ইজ পূজাৰ্চনা নট পূজা এণ্ড অৰ্চনা। চ' সেইটোৱে মোৰ হিষ্ট্ৰী। মোৰ হবি পেইণ্টিং হয়, স্কেচিং প্লাছ মই ষ্টেনচিলৰ আৰ্ট কৰোঁ। তো একচুৱেলি মই এক্সপ'জাৰটো পোৱা নাছিলোঁ, যদিও মানে 7 years মই আৰ্ট শিকিছোঁ কিন্তু সেইটো মই নামত শিকা, একো চাৰ্টিফিকেট নহ'লে একোৱেই নাপালোঁ। চ' যেতিয়া মানে মই নিজে বস্তুটো কৰিলোঁ তো এই বস্তুটো মানে যিটো মই আৰ্ট কৰি আছোঁ মইতো ছেল্ফ টট বুলিয়ে ক'ম, কাৰণ তাতে একো শিকোৱা নাই। চ' ইটছ লাইক এটা ইমেজিনাৰী কেনভাছ বুলি এটা গ্ৰুপ আছে আৰু আৰ্টৰ। তো তেওঁলোকে মোৰ আৰ্টখিনি চালে, যিটো মই নিজে কৰি ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ আৰু। তো তাৰপিছত মই মানে লাহে লাহে মই মোৰ আৰ্টবোৰ চেল কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। It has to be interesting because you are an RJ, you have to, whatever you talk, it has to be told in a very, the listeners can relate to you. Relate to you. Okay? They cannot see you, but they whatever you say, they should be able to build and imagine. So something you say last Holi or this Holi, you did something crazy, and that you're sharing with your friend. We are not here. None of us are here. You're just describing about your Holi experience, something, and make it interesting. ক্লাছ মানে কেনেকুৱা হয়, ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ডৰ এটা থাকে আৰু একেবাৰে লাষ্ট পিৰিয়ডৰ এটা থাকে, মাজৰ গেপখিনি এনেই। তো একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰফেচৰ উই শ্বুড গ' টু দ্য লাইব্ৰেৰী, বাট লাইব্ৰেৰীটো বেচিকেলি চাব গ'লে তেনেকুৱা একো বুকছ প্ৰভাইড নাই কৰা যিটো মানে আমি টাইম পাছ কৰিব পাৰোঁ। এণ্ড মষ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ইউজ দেয়াৰ ফোনছ অন দেয়াৰ লাইব্ৰেৰী, ইন দ্য লাইব্ৰেৰী, দে ডোণ্ট বেচিকেলি ষ্টাডি দেয়াৰ। চ' টাইম পাছৰ কাৰণে জাষ্ট এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিট টাইমটো লিখিবৰ কাৰণে দি দিয়ে আৰু। তো আমি মানে এদিন কি কৰিলোঁ, অবভিয়াছলি মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীও আছিলে মোৰ লগত, মই কেতিয়াও একো বেয়া কাম অকলে নকৰোঁ। তো এদিন কি হ'ল, আমি প্লেন কৰিলোঁ বিয়াৰ খোৱাৰ। মই বিয়াৰ নাই খোৱা, মানে এতিয়া নেটৰ ক্লাছটোতো কম্পালচাৰী কৰি দিছে। এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা চব ষ্টুডেণ্টেতো নেট মানে এক্সাম দিব বিচাৰিব পাৰে ন, বাট ষ্টিল মানে আমাৰ কাৰণে কম্পালচাৰী। আমি কি কৰিলোঁ সেইদিনা বাংক কৰিলোঁ ক্লাছটো। তো ক্লাছটো বাংক কৰি মানে সেইটো বিয়াৰ খোৱাৰ প্লেন হ'ল। আমি গ'লোঁ, গৈ মেলি সেইটো মানে একচুৱেলি ক্লাছত ডিচাইড হোৱা নাছিলে, যেতিয়া ওলালোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেতিয়া তাৰপিছত ডিচাইড হৈছে মানে। তো আমি বিয়াৰ চিয়াৰ মানে ল'লোঁ মেলিলোঁ। তো মোক মানে ফ্ৰেণ্ডজনী সুধিছে যে তই কি বিয়াৰ খাবি। মই কৈছোঁ মই আজিলৈ খায়ে পোৱা নাই, কোনটো বিয়াৰৰ কিমান নিচা লাগেই নে নালাগে মই একোৱেই নাজানো। তো ষ্টিল মানে তাই মোক ছাজেষ্ট কৰিছে যে তই এইটো খাব পাৰ। তো ল'লোঁ, লৈ মেলি খুব ভয় ভয়কৈ খাইছোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় অবভিয়াছলি। তো মানে ভয় এটা থাকে যে কিজানি নিচা চিচা লাগি যায়, ক'ত যদি পৰি যাওঁ কি হ'ব। তাতে আছিলে একদম কৰকৰীয়া ৰ'দ। তো শুনামতে সেই ৰ'দটো পৰিলেও মানে অলপ নিচা লাগে বুলি কয়। এতিয়া মোৰটোতো আইডিয়াই নাই। তো মাৰিলোঁ আৰু
আধা বটলমান গ'ল আধা বটল খোৱাৰ পিছত নাই মই ঠিকে আছোঁ মানে ষ্টেবল আৰু অলপো একো হোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ কেনেকুৱা বুলি কওঁ মেডিচিন টাইপ আছিলে কাৰণ মোৰ দেউতা ডক্টৰ হয় এক্সপ্ৰেশ্যন নাই ক'ল্ড ড্ৰিংক খালে যেনেকৈ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যিটো লাগি যায় সেনেকুৱা আছিলে এক্সপ্ৰেশ্যন বিশেষ একো নাই তো আধা বটল গ'ল এক বটল খোৱাৰ পিছতো মানে মই পূৰা ষ্টেবল হৈ আছোঁ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই বোলো আধাতে থৈ দিলোঁ আৰু হৈ গ'ল আৰু নোৱাৰোঁ খাবলৈ তো সেইটো এটা কাম কৰোঁ যিটো আজিলৈকে মাহঁতে গম নাপায় এই ৰেকৰ্ডিংটো যদি বাই চান্স লিক হৈ যায় মই কিন্তু তাতে চেছ ফ্ৰম মাই ওন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আই এম টেলিং আই ৱাজ ছ' নাৰ্ভাছ I was telling her that I would leave now. I'm not going to give the audition. But it's totally fine. So please come up on the stage. Hello everyone, this is Ekta Rai. नाम है मेरा एकता पर कहते हैं सब मुझे मिथिला. Just because of my hairs, you know, I got curly hair. So दूसरी बात मैं करती हूँ बातें काफ़ी बड़ी पर हो काफ़ी छोटी सी. So don't mind me. Namaste. I am born in Bihar and brought up in Assam. After my 12th standard, मैंने एक साल ड्रॉप ले लिया था and I was in Kolkata preparing for NIFT, BF Tech. So वहाँ I was enjoying a bit. I was in the I don't know, remember the institution name, but I was enjoying over there, you know, preparing some crazy stuffs, mixing and colors and everything. But then एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने न्यूज़पेपर देखा. न्यूज़पेपर में था mass communication. It was written something like that. So you know, I got a bit emotional. Like I wanted to pursue mass communication from the very first day. Like you know, after I completed my high school, then gradually I thought of giving the NIFT examination. I got some 1,000 points. Maybe I would have been in Shillong NIFT अगर मैं यहाँ नहीं आती आसाम DonBosco. फिर मैंने मास कम्युनिकेशन के लिए कॉलेजेस ढूंढना स्टार्ट किए तो मेरे परसेंटेज भी काफ़ी कम थे सो इट वाज लाइक कहीं भी मिल जाए तो इट्स फाइन देन आई गॉट हियर इंटरव्यू उसी दिन हुआ आई क्रैक द इंटरव्यूअर का पहला सवाल यही था कि अगर मास कम्युनिकेशन तुम्हें क्यों करना है तो मुझे इतना नहीं पता था सो आई सेड आई जस्ट वांट टू हैंडल सोशल मीडिया सो इसीलिए मैं कर लेती हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं सोशल मीडिया इज़ अ बिट ऑफ इट मास कम्युनिकेशन इट्स लाइक वेरी वास्ट फील्ड तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो उसमें तो फिर आई स्विच बैक टू मास कॉम आई केम हियर एंड आई एम प्रीटी हैप्पी सो आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन दार्जिलिंग हाँ वही मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है इतनी कुछ कारनामे कर लिए ना आप तो ऐसा लगता है कि या वेरी नॉर्मल या आई नो बट कुछ और था नहीं दिमाग में ही नहीं आ रहा है जब इसे बोल देते ना कि फटाक से ये लिख दो कि तुमने क्या किया तो फिर दिमाग में कुछ आता ही नहीं है ठीक है तो मैं इंटर्नशिप कर रही थी रेडियो में ही कर रही थी रेडियो चौकी में दार्जिलिंग रेडियो सॉल्यूशन में तो वहाँ पे मैं थी और मेरे कुछ सीनियर्स थे हाँ दार्जिलिंग सलेशियन रेडियो सलेशियन पहले ईयर था अब काफ़ी जोश था कि हाँ भाई अभी तो इंटर्नशिप कर ही डालनी है ठीक है किसी और ने नहीं किया मैं बस मतलब चल दी बढ़िया बिस्तर पकड़ के कि चलो अब तो इंटर्नशिप करना है वहाँ शुरू हुआ पहला दिन दूसरा दिन काफ़ी अच्छा था फिर काफ़ी ठंडी है वहाँ पे तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम ड्रिंकिंग ओके क्योंकि मैं पहली बार मैंने कुछ ऐसे हट के किया वो भी अपने सीनियर्स के साथ फिर तो ये हो गया मैंने पी भी लिया एकदम मस्त फिर मैं सोची कि कुछ करना चाहिए मेरे सीनियर्स ने मेरा फ़ोन मतलब काफ़ी दूर फेंक दिया लेकिन मैं तब भी मतलब मुझे तो करना है ठीक है ऐसा जोश पूरा फ़ोन वोन ढूंढी एकदम कॉल वॉल किया गाली वाली दिया एंड एवरीथिंग आई डिड आई वाज लाइक सो हैप्पी नेक्स्ट मॉर्निंग ओके दैट आई डिड दैट सो आई एम ग्लैड या दिस इज हाँ अरे भाई गाली देने वाले काम करने से तो गाली देना बनता है मैं कविताएँ लिख लेती हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पे मतलब रील्स ही भरे हुए हैं ऐसे मैं दिन भर लिखते ही रहती हूँ जब मन करे वो होता है ना अभी लिख रही थी बैठ के वहाँ पे सुनाओ कहते हैं ना कि हर नई चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है First of all, I'm from Dibrugarh, Assam, and
I did my schooling from DonBosco Dibrugarh, and then I did my 11-12 in science from Solberg Academy. Then I dropped a year because I was preparing for engineering. Karon more engineering korbologya asile aguprai. Then because that was the original plan, holai moi bhabisile je moi engineering kam logote I'll be, you know, agote more cousins bur dekhoisile mane engineering college board hodai metal festivals bur hoy to band festivals bur hoy. So more hetwe mane horte aru 9-10 hopun asile pura fixed aru hetu that moi engineering korim, then engineering goi that more band eta bonibo and stuff like that, you know. Jeto I couldn't afford it, so ekdin bhabilu enoka kiba eta line bisor jot I can just give my best, you know, all enoka ekhon feel pabo paru jot moi hey media linore manubor logot moi thakibo paru. So I knew about DonBosco University because I'm a student of DonBosco, or more teachers bro suggest korisile. Then henne I Google korilu Assam DonBosco University. Then I started watching all the videos jonbo campus tour asile. Then khub bhal lagile mor. Then form fill up korilu, JW results ahile, as it was obvious mor nohol goi. But I also appeared for Assam Engineering jonto mor hoy goisile motamoti like moi খুব ভাল হোৱা নাছিলে, বাট শেষৰ ফালৰ কলেজখিনিত মোৰ পাব পৰা মানে কেপাচিটি আছিলে, সিমানখিনি মানে মাৰ্কছ মই পাই গৈছিলোঁ। দেন ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল, তেওঁ ক'লে ঠিক আছে ইউ আৰ চিলেক্টেড, কাউণ্টাৰত ফিটো পে' কৰি দিবাগৈ। দেন কাউণ্টাৰ আহিলোঁ, আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে চাগে ব্লক 1ত ধুনীয়াকৈ চাৰ্কল কেটৰিয়াম এটা আছে আৰু তাত ষ্টেজ এটাও আছে। আৰু সেই ষ্টেজটোৰ মুখতে মই তেতিয়া বহি আছিলোঁ, বিকজ কাউণ্টাৰত বেলেগ মানুহ আছিলে, মই আৰু মোক দেউতা বহি আছিলোঁ। আৰু কাউণ্টাৰটোৰ মুখত যোনটো ষ্টেজ আছে তাত এখন বেনাৰ এখন আছিলে, আৰু তাত তেতিয়া ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ ইন টু দ্য উডছ বুলি যোনটো পইম আছে তাৰ সেই লাইনটো আছিলে। তাৰ দুটা লাইন আছে য'ত কয় যে তেওঁ আই চ 2 roads and I took the one less travel by। তো মই সেইটো সময়ত সেই লাইনকেইটাক চাই আছিলোঁ। এণ্ড ইভেন এট দেট মোমেণ্ট মোৰ মাজত ইনচিকিউৰিটিটো আহিছিলে যে আই এম লিভিং চায়েন্স এণ্ড আই এম গোয়িং ইন টু ছামথিং ট'টেলি নিউ, চ' কি হ'ব কি নহ'ব। আৰু আই ৱাজ এবাউট টু পে দ্য ফি, আৰু সেইটো সময়তে মোৰ আছাম CWৰ ৰিজাল্টছৰ মেছেজ আহিছিলে। আৰু মই পাপাক ক'লোঁ যে পাপা ৰিজাল্টৰ আহিছে। দেন পাপাই ক'লে ইউ চিয়'ৰ না ইউ ৱান্ট টু ডু দিছ? মই ক'লোঁ ইয়া আই এম চিয়'ৰ, লাইক আই হেড টু মানে টেক দিছ কি বুলি কয় লিপ অফ ফেথ বুলি যোনটো কয়, মই আই হেড টু ডু ডেট। এণ্ড মই ক'লোঁ ইয়া চিয়'ৰ ইটছ ফাইন, আৰু হ'ব নহ'ব মই নাজানো, বাট লাইক আই জাষ্ট chose it, and yeah, that's how I became part of Assam DonBosco University. So I was in love with this girl, so I was in class 12. So she was in a different college. She was my girlfriend back in class 9. Then at the time we were just talking. She wasn't my girlfriend, but she came back home. I was in Dibrugarh and she was in Jorhat. And moi tai ghorle goisilo, and we were, you know, we were talking on her terrace. And তেতিয়া হয় ন, যেতিয়া মানে when you love someone you make plans with them, and মই তেনেকৈ তেওঁ মানে সুধিছিলোঁ আৰু ডেট আমাৰ তেতিয়া ক্লাছ 12 শেষ হৈছে, আৰু এইটো আছে এৰাউণ্ড আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ। চ' মই তাইক সুধিছিলোঁ আৰু যে তোৰ প্লেনটো কি, এতিয়া কি কৰিবি। তাই আগতে তাইৰো প্লেন IIT আছিলে এণ্ড ষ্টাফ লাইক ডেট। দেন শ্বি ৱাজ, বাট ষ্টিল আমাৰ হয় ন লাষ্টত যোনবোৰ অপশ্যন বনাওঁ, যেতিয়া শেষৰ ফালে আহি যায় আমাৰ অপশ্যনবোৰ লাহে লাহে তললৈ আহি থাকে। চ' মই তেতিয়া তাই কৈছিলে যে মই NIT শিলচৰত পালেও মই যামগৈ বুলি। দেন ময়ো তাইক ক'লোঁ ঠিক আছে NIT শিলচৰত পালে ময়ো যামগৈ বুলি। দেন তাই সুধিছিলে আচ্ছা তই আহিবি নেকি? মই ক'লোঁ আহিম ঠিক আছে। দেন মানে সেইটো সময়ত মই তাইক যদিও নক'লোঁ, দেন আই ৱাজ জাষ্ট কনভিন্সিং মাই চেল্ফ ডেট অ'কে চ' আই থিংক ইট শ্বুড বি NIT শিলচৰ। দেন তাইৰো মানে আই হেড ট্ৰাষ্টেড হাউ ডেট মে বি তাই কৰি ল'ব। চ' তেতিয়া মই নিজকে কৈছিলোঁ আৰু যে ইয়া উই উইল ডু ইট। চ' ইন দি এণ্ড আই থিংক আইল ফাইনেলি এণ্ড আপ উইথ হাৰ ওৱান্স এগেইন। চ' সেইটো হ'ল, বাট দেন লাষ্টত নহ'লগৈ একো। শ্বি ইজ ইন এ ডিফাৰেণ্ট প্লেচ নাও এণ্ড চ' আই এম। নমস্কাৰ চবকে, মোৰ নাম দেৱঋষি, মই তেজপুৰৰ পৰা হয়। And what else can I tell about myself? I guess I really like films, and মই সৰুৰ পৰাই films বহুত চাই আছোঁ, and not really necessarily as in good films, like I watch every kind of films whenever I get the time. And मैंने ऐसे भी movies देखे हैं जो मैंने अपने बचपन में नहीं देखने चाहिए थे. I'm not talking about those movies, but I'm talking about the ones with much gore in it. So, and I also read about a few things. So I guess I'd like to share a story about a series I watched. It's called Berserk, written by Kentaro Miura. It's a story में क्या होता है, there's a guy called Guts. So उसका story बहुत sad है, and जब वो छोटा था, his mom, he was conceived by a dead mother. So story to एटू की है कि there was this one tree in which there were many hung up ladies. So one of those ladies, she was pregnant, and that was when a band of hawk, they came in and Paule took Jonmo Dile in front of them, and from there on how he fought with the struggles of life, and he can again nijoke at a good willing man bonale. And I feel like that
I can coincide with that feeling. Not that I'm born like that my mother is not here. I'm not saying that. But hey, Lora Proti, Juntu tar character, or tar Juntu way of talking, way of life, way of thinking, or whatever he does with his character or like his goal coincides with me. You almost died in the pool. Yeah. Yeah, can you describe that situation and make it, but you have to make it interesting. See, so far, I'm not getting Rohal in your talk. So, this incident, you should floor me. Okay. So, I was very young. I guess 3 বছর just learned how to walk. Like, I don't know, 3 years people can walk, but like I was very frail. मैं बहुत frail था. So I learned how to walk back then. And Ayora গৈছিলো, that one place in Kaziranga side. So my dad took me there, and my mom was there, and my grandmother was there. So I got a chance to palu, pool to dekhi palu. I'm a pool, like 3-year-old kid, he does not know what a pool is. I saw a body of water. I thought, chalo, kya hoga? I did not know. I'm in there. I jumped in there. Kuch samajh nahi aa raha hai. Like there's like the bubbly noise in my ears, right? And then I was thinking, ki, shit, am I gonna die? Like I don't really remember it vividly, but still, वो थोड़ा एक hazy memory है, and that was what I was feeling back then as well. फिर अचानक से I saw this one person, like I guess lifeguard, तो उन्होंने मेरे को उठाया and he gave me CPR. उसमें भी like I was a bit conscious, but I was also a bit unconscious. I was listening to my mom. I can vividly said, "Babu, keyhole," and when I woke back up, I was already back home because I was unconscious. उसके बाद मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तू pool में गिर गया. And he told me some stuff back then, which I don't remember now. But few years later, same thing again happened. In the sense that I saw this one pool. I was with a bunch of people with me. I didn't really know them. So मेरे भैया लोग थे, मेरे cousins, brothers, and they were there. So one guy pushed me in the pool. I don't know how to swim. Again, the same thing happens. But luckily, मैंने जब पाँव दिया and I pushed my heel up. I was barely, मेरा nose, I could, this thing, what do you call it? No. Breathe. So I forgot the word, sorry. So I was barely able to breathe, and तो मैंने improvise किया. I drank some water and then looked up, and then I started what do you call it, breathing. तब तक मेरे भैया आए. He's like 6-7 feet tall, like some basketball player. I don't know what he's doing. And then he picks me up and then like say, who pushed you over? And then yeah, that's the story. 2 times I almost died in a pool. Thank you so much. Bye. Thank you. And yes, one more thing. Please do follow us on Facebook and Instagram. GupShup 94.3 FM. That's our official handle. और साथ में मुझे भी follow कर दीजिएगा आज संची 94.3 FM. Thank you so much, guys. Thanks a lot.